Hello everyone, Aman here and you are watching to my YouTube channel IT Paradigm. So in this video हम लोग सीखने वाले हैं कि Excel में किसी भी सेल को किसी भी शीट के साथ कैसे लिंक करना है। रिपीट अगेन कि Excel में किसी भी सेल को किसी भी शीट के साथ कैसे लिंक करना है। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक छोटी सी नॉलेज है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है कि हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। So here hyperlink is a link or path that connects a text to a place। मतलब कि हाइपरलिंक एक पाथ होती है या फिर एक लिंक होती है जो कि एक टेक्स्ट को किसी भी जगह से जोड़ती है। और उसी का उलट हाइपर टेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। तो हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच टू विच हाइपरलिंक इज अप्लाइड। जिस किसी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक अप्लाइड होगी उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें ऐसा डेटा आप बना सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। अगर आपको आपकी जो वर्कबुक है उसमें ढेर सारी शीट्स हैं और आपको नेविगेट करना है कि कौन सी शीट में कौन सा हमारा टाइटल या फिर हमारा कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर है, या फिर इट विल वर्क एज इंडेक्स और कंटेंट ऑफ द बुक। So here I have steps, step 1, step 2 and work. The first work is admission, fees, transport and the dates, and in the last the main is location. So to navigate that, admission is in sheet 3. So we will link this cell, this is the G6, to sheet 3. How will we do that? We will go on insert tab and in the right side we have link option here. Click on it and a pop-up window will appear like this. Now from these 4 options we have to select a place in this document. Click on it and here we will get all the sheets available in Excel. यहाँ पे हमारे पास सारी शीट्स हैं जो कि हमने इस Excel वर्कबुक में बनाई है। तो हमको यहाँ पे शीट 3 लिंक करनी है, तो हमको शीट 3 सिलेक्ट कर लेना है। शीट 3 में अगर कोई आपका स्पेसिफिक सेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई सेल एड्रेस नहीं है तो A1 सिलेक्टेड है। सो शीट 3 हमने सिलेक्ट कर ली है एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो शीट 1 जो शीट 3 पहले ब्लैक लेटर्स में लिखे थे अब वो ब्लू लेटर्स में हो गई है। अब ये एक हाइपरलिंक है और जो टेक्स्ट था वो हो गया है हाइपर टेक्स्ट। नाउ इट इज हाइपर टेक्स्ट and hyperlink is applied to it. Now to go on sheet 3 we have to click on it. Now you can see this is the sheet 3 and to back we have here sheet 3. Okay, now again there is a shortcut also to apply hyperlink. In the previous video I have told that is Ctrl+K, so the same dialog box appear. Now this time we will select sheet 2 to be hyperlinked. So this text is a normal text and after applying the hyperlink it will become hypertext. So sheet 2 is here, I have selected, and let's say this time I am giving the cell address also, that is G7, and click on OK. Now again sheet 2 has changed its color, and to run this hyperlink click on it. It will take us to the G6 cell of sheet 2. Simple. So that's all for this video. See you in the next video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शेयर करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। So that's all. Thank you for watching the full video.